Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sadim Rashid and welcome to Food Street. When we talk about chai, one thing comes to our mind is Kashmiri chai because of its amazing color and its unique taste. Today I'm going to show you how you can master that perfect pink tea at home. So I'm going to take you through all the recipes. So let the fun begin. So before we get started, let me show you what exactly we got here. I have Kashmiri chai here. I have some sugar that we would need. I have pistachio तो मैंने coffee grinder में grind कर लिया था. Same thing I've done with the badam as well, with the almond, or some salt and baking soda, which is something we would need in the end. पानी जो है, one thing we have to know is पानी we have to use as a cold water. वरना usually this is where people go wrong, right? क्योंकि इसका अगर आप cold water नहीं use करेंगे तो उसका जो proper color है pink color का वो नहीं आएगा perfect pink. So just make sure you're using a cold water. So what I have done so far is एक container में मैंने काफ़ी सारी ice cubes डाल दिए हैं ताकि पानी अच्छा खासा ठंडा हो जाए. Other than that, I have about 7 to 8 green cardamoms. मेरे पास है cinnamon stick जो कि एक है, 1 star anise यानी बादियान का फूल है. And these are all the things that's gonna go to make a perfect green tea. So let's get it started. Bismillahirrahmanirrahim. So let's get it started. सबसे पहले हम ये करेंगे कि कोई सा भी एक पॉट ले लिया, उसके अंदर 3 cups of cold water हम इसमें ऐड करेंगे जो कि ice cold water हो. So I'm going to add ice cold water. और ये जो कश्मीरी चाय है ये 2 step process है. So सबसे पहले हम इसका कहवा तैयार करेंगे और then we are going to mix the कहवा into the milk ताकि इससे ही perfect pink tea ready हो जाए. So we got 3 cups of water, ice cold water, जिसमें मैं ऐड करूँगा star anise, cinnamon stick, and all these 7 to 8 green cardamoms यानी इलायची. I think सब्ज़ इलायची कहते हैं इसको. और उसके अलावा मैं ऐड करूँगा 3 tablespoon of कश्मीरी चाय. 1, 2 and 3. तो हम इसको बॉयल होने देंगे फॉर गुड 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट. ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, हम उस वक्त तक करेंगे इसको बॉयल जब तक सिर्फ आउट ऑफ 3 cups ऑफ वाटर को हमने जो ऐड किया है उसमें से सिर्फ ओनली 1 cup ऑफ वाटर नहीं रह जाता. सो जस्ट लेट इट बॉयल फॉर नाउ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. So just to show to you, all you have to do is mix it well and wait till the whole water evaporates और सिर्फ 1 कप का पानी रह जाए. So all we have to do is mix it and we don't have to do anything, right? At this stage जब पानी इसका वो हो जाएगा, so we'll have to add 2 more cup of cold water जो कि हम इसमें ऐड करेंगे. So just let it wait and let it boil. So if you can see now, all the whole water is evaporated and only about a cup of water left. और इसका जो कलर है वो स्लाइटली ब्राउनिश और थोड़ा डार्किश हो गया है. तो एट दिस स्टेज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ऐड हाफ अ टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा. and half a tablespoon of salt as well. और इसको continuously we have to mix it. So see, now it's turning slight pink. So what we are going to do is add 2 more cup of ice cold water. So उस वक्त तक पकाना है जब तक 1 कप पानी नहीं रह जाए इसमें. So let it boil. So we still have lots of water left. Now I just wanted to show you the color. So see, the color is turning pink now. So this is what I wanted to show you at this stage. So just keep on mixing or let the water evaporate जब तक ये सिर्फ only 1 cup of water नहीं रह जाता. So we'll let it boil. So keep on mixing, keep on stirring
कंटिन्यूसली, और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ जब बिल्कुल पानी इसका नीचे चला जाता है तो. सो इफ यू गाइज नाउ नोटिस, पानी सारा evaporate हो गया है, and the whole thing, if you can see, is turned into a bit pink, right? So I'm going to add 3 more cup of ice cold water. So altogether सिर्फ 3 cup आपका पानी बचना चाहिए, and that would be it. So stage 1 would be complete, and when it's done I'll show to you guys. So a few more minutes and we should be done inshallah. So if you can see now, इसमें boil आ चुका है, and I can see pink bubbles and it smells incredible. और ये about 3 cup के इसमें पानी बचा है. So what I would do is, for now, turn off my stove. और मैंने एक स्टेनर ले लिया और एक बाउल ले लिया. यूजुअली मैं इसको कंटेनर में डालता हूँ, लेकिन आई वांटेड टू शो टू यू गाइस सो यू कैन सी. एक बाउल में मैं आपके सामने इसको वो कर लूँगा, ताकि जितने इसके लीव्स वगैरह, कार्डिमन एंड एवरीथिंग दैट वी एडेड, वो स्टेनर में कलेक्ट हो सके, और सिर्फ पानी जो है वो जा सके इसके अंदर. So our step 1 is now done, and I'll show you the next step shortly. So let me put it away and I'll see you guys in a minute. So for stage 2 मैंने ये किया है कि I took a different pot जिसमें मैंने about 2 cups of milk ले लिया है. इसमें मैं sugar ऐड करूँगा about, मतलब it's just as per your taste, right? So you can add it as much as you like, or we'll wait till milk is boiled. So उसके बाद जो हमने कश्मीरी टी का कहवा बनाया वो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, और इस तरीके से कश्मीरी चाय का जो कलर है वो पिंक आएगा. So just wait couple of minutes for it to boil. उसके बाद हम इसको कश्मीरी चाय के कहवे को हम इसमें ऐड करेंगे. So I'll see you guys shortly. So not sure if you can see guys, milk में boil आ चुका है. So what I'm going to do is, इस stage पे मैं थोड़ी सी कश्मीरी चाय लूँगा and I will add into my milk, और इसके बाद मिक्स करके मैं आपको फाइनल रिजल्ट जो है, सी स्टार्टेड टू गेट पिंक. सो इसके बाद इन अ मिनट और 2 ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ इंशाल्लाह. सो आई विल सी यू गाइस शॉर्टली इंशाल्लाह. So guys, our Kashmiri chai is finally ready and it looks amazing. It looks incredible. And this is exactly how I want it. So let me show it to you. It's perfectly pink. So I'm going to add a bit of sugar, just a bit. And I'll top it up with a bit of pistachio on the top. Just sprinkle a bit of almond as well. And that's about it. And let's give it a try. So Bismillahirrahmanirrahim. I hope it tastes as amazing as it looks. So wow, stunning, incredible. I hope you guys enjoy the video, and I hope to see you guys soon inshallah in the next video or 2. Allah Hafiz.